Hey guys, welcome back to my IGTV. This is Ritika. So recently I asked you guys what do you want to see next in my IGTV video, and seems like a lot of you are interested in a hair care routine. So in today's video I'm going to talk about hair care in a very detailed way, very minute tips which usually we miss on a day-to-day life, and it actually makes a huge difference. It can bring up your hair care game from here to here. So आज के वीडियो में I'll be talking about stuff which you might not be aware of. Like even I wasn't aware of few years back, but then when I started to apply them in my life, it really made a huge difference. So I'll start off with oil, shampoo, conditioner, and then I'll talk about the do's and the don'ts and how certain things can harm your hair to such an extent that you shouldn't be doing it. Like after you have watched this video, you shouldn't be doing it actually. And even like on a positive note, there are few things which can actually change how your hair feels and the health of your hair basically. And uske baad what I'll do is that I'll let you know some of the organic and also inorganic vitamins and supplements which you can take in case you want to see an amped up growth. Basically you want to see results fast. Okay, so just before we move straight into the video, I want to put out a quick disclaimer that if I'm mentioning any product in this video, it's completely my personal opinion and in no way any of these products are sponsored. So you can be very much assured that whatever I'm talking, it's my genuine opinion. कोई भी product sponsored नहीं होगी. And so yeah, let's move right into the video. And in case you're wondering what lip shade I'm wearing, so it's basically a mix of Nykaa, Guwahati and NYX lip matte cream in the shade Monte Carlo. Okay, so first in the topic is oil. So किसी भी hair care routine में the most important thing is hair oil, and आपको basically तीन चीज़ें हमेशा अपने दिमाग में रखनी है when it's related to hair oil. So the first thing is that you need to oil your hair at least twice a week. अगर आप उससे ज़्यादा कर पाते हो, like for guys उनको उतना फर्क नहीं पड़ता, but girls can't go around and roam around with a oily head. But हाँ, just because everybody is at home right now, I think इस situation का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हो. So hair oil at least आपको हफ्ते में 2 बार तो लगानी ही चाहिए. The more the better, but at least twice a week. So the second point which I would like to mention over here, that don't go for hair oils which are available in a very blended form. जैसे कि जो hair oil they say that it's non-sticky or it's a very fragrant hair oil, तो उन hair oils की दिक्कत ये होती है कि उनको इतना ज़्यादा blend कर देते हैं and इतना ज़्यादा artificial fragrance add कर देते हैं कि उनकी जो purity है वो वहीं ख़त्म हो जाती है. They won't benefit you much. तो आपको actually कोई फ़ायदा ही नहीं होता है जब आप उन हेयर ऑयल्स को यूज़ करते हैं. बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल मैं दूंगी. पैराशूट के 3 से 4 तरीके के हेयर ऑयल्स आते हैं. कोकोनट हेयर ऑयल, सो दे आर अवेलेबल इन 4 डिफरेंट वेरिएंट्स. तो जो फर्स्ट वाली है विच इज़ एक्चुअली अवेलेबल इन अ ब्लू ओपेक बॉटल, विच इज़ दी वन जो सर्दियों में जम जाती है, that is the pure, like अगर उस ब्रांड की बात करें, that is the purest form available for that particular brand. बाकी के जो like oil है, I've seen a very clear version, like एक clear bottle में with jasmine infused and hot oil, parachute hot oil. फालतू, बहुत ही फालतू. You should always go for the purest form available. आप कोई और ब्रांड का भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कावा आयुर्वेदा या फिर खादी, और भी बहुत सारी, जैसे मॉर्फीम का भी एक है, लाइक आई एम यूजिंग मॉर्फीम रेमेडीज़. तो बहुत सारे दूसरे ब्रांड भी आप ट्राई कर सकते हो, बट मेक श्योर दैट विच एवर ऑयल यू पिकअप वो एक प्योर फॉर्म में
में हो, so that it can benefit you actually. And the third point which I want to talk about is that हमेशा ऑयल पिक करते वक्त अपने हेयर गोल्स और अपने हेयर टाइप को आप प्लीज़ ध्यान में रखिए, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ हेयर ऑयल्स विच आर अवेलेबल, एंड अगर आप अपने हेयर टाइप के हिसाब से या फिर अपने हेयर गोल के हिसाब से आप ऑयल नहीं पिक कर पाते तो आपको वो एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं मिल पाता है. बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ आई एम ऑयलिंग माई हेयर बट आई एम नॉट एबल टू अचीव दिस पर्टिकुलर थिंग लाइक फॉर माई हेयर. सो उस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखिए. ओके, सो लेट मी जस्ट हेल्प यू विद इट. इफ़ योर हेयर फॉल्स इन अ वेरी ड्राई कैटेगरी, आपके हेयर बहुत ड्राई रहते हैं, आपकी स्कैल्प बहुत ड्राई रहती है, आप बहुत सारा कंडीशनर यूज़ करते हो बट फिर एक दो दिन बाद आपको फील होता है कि अरे यार ये वापस से ड्राई हो रही है, बहुत फ्रिज है, रफ है, देन बॉस कोकोनट ऑयल, गो फॉर इट. आँख बंद करके गो फॉर इट. इट इज़ द किंग ऑफ मॉइस्चराइजिंग. एक्चुअली बहुत लोग जो ड्राई स्किन से सफ़र करते हैं, जिनको बहुत पीलिंग होती है अपने स्किन में, लाइक टू दैट एक्सटेंट उनकी स्किन ड्राई होती है, दे एक्चुअली अप्लाई कोकोनट ऑयल ऑन देयर फेस. इट इज़ very very beneficial for people who have dry hair and dry scalp. So what you can do, you can either leave the oil overnight and wash it off the next morning, और अगर आपको ये नहीं जमता है so शैम्पू करने के 1 घंटे पहले you can heat up the oil a bit, like थोड़ा warm उसको रखना, and then you can apply it, and after 1 or 2 hours you can just wash it off. Okay, so moving ahead, I have heard a lot of people say that मेरे बाल लंबे नहीं हो रहे. मैंने हेयर कट करवाया, मेरे बाल लंबे नहीं हो रहे, और अगर मैं हेयर कट नहीं करवा सकती बिकॉज अभी अगर मैंने करवाया तो 3-4 महीने तक मेरे बाल लंबे नहीं हो रहे. क्यों लंबे नहीं हो रहे? जबकि कुछ लोगों के हेयर ग्रोथ इतने ज़्यादा होते हैं, तो प्रॉब्ली इट्स लाइक बहुत लोगों के जीन्स में वो चीज़ होती है कि उनके हेयर बहुत जल्दी ग्रो करते हैं. बट अगर आप आपके साथ ऐसा हो रहा है, if you're experiencing that your hair is not growing in the length, like in a lengthwise, then you should definitely try olive oil. उसकी properties ही ऐसी है that it promotes hair growth. तो if you're looking for that length and also अगर आपको थोड़े long hair goals है, then you should definitely try out olive oil. So now let's talk about hair volume. अगर आपकी जो हेयर डेंसिटी है, आपको ऐसे हाथ फेरने पे आपको पता चलता है कि आपकी हेयर डेंसिटी बहुत कम है, तो यू शुड रियली स्टार्ट वर्किंग फॉर योर हेयर वॉल्यूम. मेरे हेयर का क्या सीन है कि मेरे स्ट्रैंड्स बहुत पतले, लाइक द हेयर इज़ रियली थिन, बट ठीक है, लाइक द हेयर वॉल्यूम आई हैव, द अमाउंट ऑफ हेयर ऑन माई हेड इज़ इन अ वे दैट वो मैनेज हो जाता है, वो बैलेंस हो जाता है. सो इवन इफ आई डू लाइक दिस, आपको लाइक इट रियली फील्स फुल. एंड इफ यू आर रियली like lacking on the hair volume, then try castor oil. Castor oil boosts your hair volume like anything, like it blows. Even लोग जिनके eyelashes थोड़े short होते हैं, they are not dense. If you actually try this, guys, try this. अगर you feel your eyelashes are not long enough or not dense enough, एक कॉटन वो Q-tips होते हैं ना, उसको कैस्टर ऑयल में डिप करके अप्लाई करना आई लैशेस पे एंड लीव इट ओवरनाइट. 1 वीक के अंदर, आई हैव ट्राइड दैट माई सेल्फ, 1 वीक के अंदर आपको बहुत डिफरेंस फील होगा. लाइक आपके लेंथ में, आपके वॉल्यूम में आपको बहुत डिफरेंस फील होगा. तो लाइकवाइज इफ़ यू एक्चुअली नीड टू वर्क ऑन द वॉल्यूम ऑफ योर हेयर, ट्राई कैस्टर ऑयल. And I think volume किसको नहीं पसंद, so just go for it, guys, go for it. Okay, now comes the part for which I get a lot of questions, and जो एक zone है जो बहुत लोगों को परेशान कर रहा है, which is hair fall. If you're experiencing hair fall, and देखो it's like doctors ने ये कहा है कि दिन के आपके कम से कम 20 स्ट्रैंड ऑन एन एवरेज 20 to 50 strands ऑफ हेयर अगर इट्स लाइक फॉलिंग ऑफ, देन इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर आपको ऐसे इफ़ यू कोम योर हेयर, आपको बहुत सारे बाल दिख रहे हैं, यू शैम्पू योर हेयर, आपका सिंक जाम हो जा रहा है, ये प्रॉब्लम्स गर्ल्स के साथ बहुत होता है, आई नो दैट.
तो अगर आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आपको नोटिसेबल है, अगर आपका हेयर फॉल नोटिसेबल है, देन माय डियर यू आर एक्सपीरियंसिंग हेयर फॉल. बहुत ऑब्वियसली पॉइंट बोला मैंने, बट ठीक है. तो इन दैट केस यू शुड यूज़ अनियन ऑयल. तो अनियन ऑयल आपको बहुत सारे ब्रांड्स के मिल जाएंगे, एंड इन केस यू वंडरिंग विच आई वॉज यूजिंग, आई विल जस्ट पुट इट आफ्टर दिस क्लिप. So moving ahead, if you are experiencing gray hair, like आपके बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं, आपकी एज उतनी नहीं है, एंड आपको बहुत नोटिस में आ रहे हैं आपके ग्रे हेयर, देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई मस्टर्ड ऑयल. आई नो थोड़ा ग्रोस होता है, यू वोंट लाइक द फील ऑफ इट, यू वोंट लाइक, मतलब उसका स्मेल आपको पसंद नहीं आएगा, बट इट डज वर्क ऑन ग्रे हेयर. लाइक हैव पेशेंस इन दिस केस. लाइक एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू हेयर एंड स्किन, अगर आप एक ऑर्गेनिक वे फॉलो करना चाहते हैं, देन यू शुड हैव पेशेंस. बट आपको अराउंड 1-2 महीने के यूजेज में आपको डिफरेंस पता चलेगा. देन अप नेक्स्ट वी हैव आर्गन ऑयल. इन केस यू आर एक्सपीरियंसिंग स्कैल्प इचनेस, और अगर आपको डैंड्रफ है एंड scalp related problems है, तो you should definitely go for argan oil because it's an antioxidant. It will reboost your scalp, and also it has some very essential elements जो कि आपके स्कैल्प एंड आपके हेयर के लिए बहुत बेनिफिशियल है. लाइक इट विल मेक योर हेयर लुक वेरी हेल्दी. एंड अगर आपका कोई और हेयर गोल नहीं है, लाइक फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम और लेंथ और एनी मॉइस्चराइजिंग, लाइक बहुत ज़्यादा आपको मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत नहीं है, देन ऑन अ रेगुलर बेसिस आप आर्गन ऑयल यूज़ कर सकते हो. एंड दैट्स व्हाट आई यूज़ फॉर माई हेयर. आई यूज़ आर्गन ऑयल, and currently I am using the Laxara argan oil. I know I did a collaboration with them, but I do not have my argan oil like what I used to use. So I'm currently using it, and I actually really like it. I am not saying this just because I'm getting out of it, like getting anything out of it right now, but in a very general note, it is really nice. And you can go for any argan oil if you feel like, but in case you want to know, I was using the one from Morphine Remedies like prior to this, and it was actually a very good argan oil. Well, I just realized that after all this talking, we are still in the first phase, which is the oiling phase. So let's just move into the shampoo and the conditioner. So speaking for shampoos, एक चीज़ मैं बहुत clear out कर देना चाहती हूँ, that the companies who claim that the shampoos actually help in reducing hair fall or they help in hair growth, ऐसा actually कुछ नहीं होता, because the basic thing which a shampoo does is to cleanse your scalp and your hair. बस वही है. ओके ठीक है, लाइक the shampoos which come with an extra benefit, like infused with argan oil or infused with some like charcoal or something, it's good to have them, but उन सब शैम्पू से ये एक्सपेक्ट करना कि वो आपका हेयर फॉल रिड्यूस करने में हेल्प करेंगे या फिर आपकी हेयर की लेंथ या वॉल्यूम को एक्सपैंड, मतलब वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, देन आई थिंक इट्स रियली रॉन्ग. एंड हमें ये बहुत ही ये चीज़ बहुत जल्दी रियलाइज़ कर लेनी चाहिए दैट इट्स एक्चुअली नॉट ट्रू. एक चीज़ विच आई वुड लाइक टू मैंशन ओवर हियर इज़ दैट शैम्पू बाय करते वक्त ऑलवेज चेक फॉर द इंग्रेडिएंट्स इफ़ इट्स अ न्यू प्रोडक्ट दैट यू आर बाइंग. एंड एक चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखिए, यू कैन एक्चुअली गो फॉर एनी शैम्पू यू लाइक. आई विल स्टिल मैंशन फ्यू ब्रांड्स विच you can be safe with, you can actually go for them, but एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए that they are free from sulfates and parabens. वो बहुत harmful होते हैं हेयर के लिए, and you should just try to stay away from those products. And अगर in that scenario, like what I do is I mostly incline towards herbal shampoos and conditioner, because in that way I am like self-assured that I'm not harming my hair in any possible way. The brands which I would like to recommend is Saint Botanica, L'Oreal Paris and Patanjali. I am currently using this one, Kesh Kanti from Patanjali. I really like it, and also you can get your shampoo and conditioner customized like these. You can
go for customized shampoo and conditioner. अगर आपका budget थोड़ा high है, so you can definitely try a customized brand. And I'm not saying this because I collaborated with Freewill. I'm just saying because in that scenario, the shampoo and the conditioner is actually formulated for your hair, and based on your hair needs and your hair goals and आप किस तरह के environment में रह रहे हो, so it's basically formulated for you. So in that case it will work obviously. In case जैसे अगर आप student हो, hostel में रहते हो and you don't want to get a customized shampoo for yourself, because I don't remember but I think the cost for them is around 1600 to 1800. And in that scenario आप इस तरह के shampoos भी try कर सकते हो. And I actually personally use this one, the Patanjali Shikha. I use this one. Also, you remember those Ayush shampoos we used to use? Like, it's kind of lost these days somewhere. It's still available but nobody talks about it. But actually वो बहुत अच्छे होते हैं वो shampoos. And also the Saint Botanica, they mention it right on their product ingredient and जो भी advertisement में that they do not have any kind of sulfates or parabens. And also L'Oreal Paris is a good brand. Try avoiding brands like Head and Shoulders and Tresemme, Pantene. Well, Pantene has improved a lot, but still I won't recommend it. And also Sunsilk. I have noticed that in the ingredient list, it's like full of chemicals. Now what these shampoos and conditioner basically do is that they make your hair look good, like they make your hair look healthy, but actually it's not making your hair healthy or doing any benefit to your hair. And you'll notice this, the day you wash your hair feels amazing, but just after a day or two it's a very bad quality. And because for that moment it is making your hair look good rather than actually doing good for it. I hope you get it. So moving on to the conditioners, same thing, like you should avoid conditioners which have parabens and sulfates in them. And एक चीज़ है, आप ये चीज़ थोड़ा try कीजिए that you are using conditioner and shampoo from the same brand. The reason why I'm saying is that it might be possible, like in a slightest of scenario, that the shampoo, the ingredients in your shampoo is not, like react कर जाते बहुत बार. It's not compatible with the ingredients in your conditioner. So in that scenario you might experience some reaction, but that's a very rare scenario actually. Next thing which I want to mention, and you should actually keep this in mind every time you wash your hair, is that you should never apply conditioner on your scalp. You should always apply it from the scalp छोड़ के आप apply कर सकते हो. I usually go from here to the end of my hair, because till here my hair feels like it's really nice. I need not do anything till here, but the ends feel a bit dry sometimes, so I usually apply conditioner towards the ends. Now the reason why I'm saying this, that you should avoid applying conditioner on your scalp, is because conditioner की जो properties होती है वो it stays in your hair to make it look healthy. Now in the case you put it on your head, it will stay in your scalp and it will clog the pores of your scalp, which is really not a good thing to do. So it can cause hair fall, scalp irritation and a lot more things which I will not get into. But आपको ये नोट मतलब ये बहुत ही ध्यान रखिएगा that आप scalp पे conditioner मत डालो, because scalp पे ज़रूरत ही नहीं है conditioner की, and why to just add more product and clog your pores in the scalp. Okay, so now let's move on to the do's and the don'ts. So the first thing, I'll talk about the do's first and then we'll move on to the don'ts. So in the do's, what you need to, I'll just read it out because there are many and I cannot remember everything. So first is a hair mask. Now in this also I'll like to mention that avoid ready-made products. Like for example, so first is the hair mask, and I really like using aloe vera gel, not the ones you get like a packaged product, because I know it's easy, it's convenient, but packaged products after all are packaged products. So
try using the organically obtained one. एलोवेरा का प्लांट आप लेके आ सकते हो घर, एंड उसको आप पील करके उसका पल्प निकाल के आप अपने हेयर पे लगा सकते हो. वो बहुत like 100 times better है rather than going for a packaged product. First is the aloe vera hair mask, and also I like using the curd one. मार्केट से आप कर्ड पैकेट लेके आओ, कट इट, whip it a bit, and then you can apply it, leave it for not more than 30 minutes, because what it does, it makes your hair color a bit light. Then the next thing is that you should drink lots of water. Like I personally drink around like 5 to 6 liters of water like every day, because I feel a lot thirsty. Like मेरे वो trade में है that I feel a lot thirsty, so it's easier for me. But you should make sure that you drink at least like 5 to 6 liters per day. Is that a lot? I don't think so. Okay, so the next thing which I had in my list, उस चीज़ के बारे में मैंने already बात कर ली है, which was regarding oiling your hair twice a week at least. Then moving ahead, it is about shampooing your hair, and it should not be more than twice or thrice. Like बहुत लोगों की आदत है कि रोज़ के रोज़ शैम्पू करते हैं, लाइक जितने बार भी वो नहाने जाते हैं उतने बार वो शैम्पू करते हैं. इट्स नॉट अ गुड हैबिट. यू शुड नॉट बी यूजिंग इट लाइक यूजिंग शैम्पू कंडीशनर मोर देन थ्राइस अ वीक. Then what I would like to say is that every time you shampoo your hair, please try to condition it as well, because like it really benefits your hair. It improves your hair quality towards the ends, and you can actually do a lot of things while leaving the conditioner on, because वो कम से कम आपको 5 से 10 मिनट के लिए रखना होता है, एंड लोगों को ये पता नहीं क्यों बहुत बड़ी टास्क लगती है. Okay, let's talk about the don'ts right now. These are the things which you should avoid at any cost, and the first in my list is hair treatment. Treatments like keratin, hair smoothing, hair straightening, like all the permanent ones, you should actually avoid at any cost. अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, like not in the terms of shock, but आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप you can't actually survive without it, आपके hair अब manageable नहीं है, then आप करवा सकते हो. But I mean, I won't recommend it. Nobody will actually, because it does a lot of harm to your hair, क्योंकि वो chemically आपके hair को treat करता है just to make it look good, like again look good and not actually good. तो आपको आपके हेयर को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं, और अगर आप करवा भी रहे हो तो like whatever might be the reason, then you should actually take a lot of care for your hair. Like आपको उस like specific products यूज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि hair like treated hair के लिए अलग से shampoo, conditioner, oils, सीरम्स, सब चीज़ अलग से आती है. तो आपको वो सब सारे प्रोडक्ट्स बाय करके उसको बहुत ही रिलीजियसली यूज़ करना पड़ता है, एंड ऑल्सो लाइक यू शुड बहुत एक्स्ट्रा केयर में रखना पड़ता है, बिकॉज योर हेयर इज़ ऑलरेडी केमिकली ट्रीटेड, एंड लाइक you should avoid, first of all you should avoid that. अगर आप किए भी हो तो उसको बहुत ध्यान रखो आप. Next thing in my list is hair gel, and this is for guys out there who are listening. Hair gel is actually very harmful for your hair. It causes hair fall, dandruff, scalp irritation, like जितने भी problems होते हैं like बहुत सारे hair gel की वजह से होते हैं. If you are like using it on a regular basis, then please don't. Or the best alternative for this will be hair wax, and that also you can use a herbal one. There are many available, you can just go check it out. I'll try finding one, and then since I haven't used it, I can't say much about it, but you might be having a better knowledge on that, so go for a herbal one, and also try using a hair wax. But I'll still say try avoiding it as much as possible, ठीक है, क्योंकि जब ज़रूरत नहीं है तब मत यूज़ कीजिए. Next thing which I have in here is towel frizz. Now if you are using a towel which is not soft, बहुत ज़्यादा rough है, and आप बहुत ज़्यादा rigorously अपने hair को सुखाते हो, then आपके जो hair strands है, it kinds of वो जो outer coating है वो hamper होती है. तो उस चीज़ को आप प्लीज़ अवॉइड करो, बिकॉज इट डैमेजेस योर हेयर एंड इट एक्चुअली कॉजेज अ लॉट ऑफ हेयर फॉल. सो अवॉइड दैट गाइज प्लीज़. नाउ ऑल्सो वन मोर थिंग विच यू नीड टू अवॉइड इज स्मोकिंग, एंड दिस इज़ फॉर लाइक पीपल हु स्मोक ऑन अ रेगुलर बेसिस, एंड जो चेन स्मोकर्स है, जो स्मोक है, एंड ऑल्सो द निकोटिन, इट एक्चुअली हार्म्स योर हेयर. यू कैन एक्चुअली गूगल दिस.
तो just stay away from that. So the last thing in my don't list is that you should avoid sunlight, like the direct sunlight on your hair. जब भी आप बाहर जाते हो and it's kind of sunny, so always carry a scarf with you. And sunlight actually आपके जो hair shafts है उसको बहुत ज़्यादा harm करता है, and it kind of loses its sometimes the color, and also like जो hair graying के problems होते हैं बहुत बार वो direct sunlight की वजह से भी होते हैं, because the hair cannot withstand the heat, जो कि बहुत ही common चीज़ है. तो in that scenario you should avoid direct sunlight on your hair. So let's now talk about hair supplements. So the 3 types of hair supplements which are really beneficial for your hair is vitamin C, biotin and cod liver oil. Just make sure that if you are using vitamin C, your dose should not exceed 1000 mg. Like I have been using the Selene 500 जो 500 mg की एक tablet आती है, and you can use twice a day. So make sure that आपकी जो विटामिन सी की डोजेज है वो 1000 mg एक्सीड नहीं करनी चाहिए, because then कुछ बहुत माइन्यूट साइड इफेक्ट्स होते हैं like headache and other things. So just make sure you're not exceeding the 1000 mg limit. Hey guys, so that was it. Finally we have reached towards the end of the video. It was really long, I know. It took me a lot of effort to shoot it, and I know it will also take me a lot of effort to edit it. So please if you really liked it, please एक like ज़रूर कर देना. It means the world to me and it gives me confidence. It also tells me that you support me, and please just drop in a like, share this video, and also comment what you feel about it and the best thing you felt about this video. Thank you so much for watching guys. I'll see you in the next video. Bye.